Good morning, students. In today's lecture, we are going to discuss our next topic in surface chemistry, that is types of adsorption. Types of adsorption on the basis of intermolecular forces of attraction. Types of adsorption. So types of adsorption. First one is physical adsorption. Physical adsorption. And second one is chemical adsorption. Physical adsorption and second one is chemical adsorption. So first of all, we will discuss what is physical adsorption. So physical adsorption is it is defined as the type of adsorption in which so it is defined as the type of adsorption in which the adsorbate molecules are held by the surface of adsorbent with weak van der Waals forces of attraction. Van der Waals forces of attraction. With weak van der Waals forces of attraction. So this is known as physical adsorption. See, here I am taking a solid adsorbate molecule, or here I am taking the adsorbate molecule. Adsorbate molecule is present in gas state, ठीक है, and जो surface जिसके ऊपर adsorption हो रही है, adsorbent, that is solid, and as adsorption is taking place, then see what will happen. The adsorbate molecules, in case of adsorption, what will happen? The adsorbate molecules will be present on the surface of adsorbent, and here we can write that the gas molecules are present on the surface of a solid. Let us understand again this. See, adsorbate molecules, ऐसे molecules जिनकी adsorption हो रही है, ठीक है, the molecules which are undergoing adsorption are known as adsorbate molecules, and the surface on which adsorption is taking place is known as what? Adsorbent. Now the gas molecules are adsorbed on the surface of a solid, ठीक है, on the surface of a adsorbent. So here we can write adsorbate molecules are present on the surface of a adsorbent, or the gas molecules are present on the surface of a solid. Okay. So now, as the adsorbate molecules are present on the surface of adsorbent, definitely there will be forces of attraction, and the forces of attraction in case of physical adsorption are weak van der Waals forces of attraction. Again, I am representing gas is adsorbed on the surface of solid
here I am representing this as a surface, and gas molecules are present on the surface of the solid. ठीक है, ये solid है, इसके surface पे gas molecules present है. So here we could say that gas is present on the surface of a solid. As the gas molecules are present on the surface of a solid, this is known as a adsorption. And which type of adsorption is this? This is physical adsorption. And here, the forces of attraction, here the forces of attraction will be weak van der Waals forces of attraction. So adsorbate molecules are held by the surface of adsorption, by the surface of adsorbent with weak van der Waals forces of attraction. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल एडसॉर्प्शन. नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज केमिकल एडसॉर्प्शन. सो इन केस ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन व्हाट विल हैपन, द एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स will be held by the surface of adsorbent with chemical bonds. ठीक है, so next is chemical adsorption. So अगर chemical adsorption की बात करें, so it is type of adsorption it is a type of adsorption in which the adsorbate molecules are held by the surface of adsorbent with chemical bonds. So in case of chemical adsorption, the chemical bond formation will be there between the surface of adsorbent and adsorbate molecules. So adsorption के लिए क्या requirement थी? adsorbate molecules should be present on the surface of adsorbent के surface पे present होने चाहिए. ठीक है, और यहाँ पे जो एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं और जो सरफेस है एडसॉर्बेंट का, उसके बीच में क्या फॉर्म हो रहा है? केमिकल बॉन्ड्स वो फॉर्म हो रहे हैं. अगेन एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एंड गैस मॉलिक्यूल्स, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड. सो हियर गैस इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड and the gas molecules will form temporary bonds, chemical bonds with the surface of the solid, and this type of adsorption is known as a chemical adsorption. इस तरह की adsorption को क्या बोलेंगे? Chemical adsorption. Now let us discuss one by one the characteristics of a physical adsorption and chemical adsorption. अब one by one जो है हम discuss करेंगे characteristics physical adsorption के and chemical adsorption के. स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन. सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहला है दैट इज जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज बेस्ड अपॉन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. So here in case of physical adsorption we can say that there is
presence of weak van der Waals forces of attraction van der Waals forces of attraction between the adsorbate and between the adsorbate molecules and the adsorbent or the surface of a adsorbent. पहला कैरेक्टरिस्टिक तो आ गया. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास लो इंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन. लो इंथैल्पी ऑफ adsorption. See, whether it is physical adsorption or chemical adsorption, adsorption process is exothermic in nature, but in case of physical adsorption, lesser amount of energy will be liberated. Physical adsorption के केस में क्या होगा, कम amount of energy जो है liberate होगी. Low energy or less energy is liberated in case of physical adsorption as there is presence of weak van der Waals forces of attraction. There is presence of weak van der Waals forces of attraction. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है दैट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. नॉन स्पेसिफिक इन नेचर means to say that physical adsorption is not specific in nature. Physical adsorption is not specific in nature. Which means any gas can be adsorbed on the surface of a adsorbent. Which means any gas can be adsorbed on the surface of a adsorbent. ठीक है. एडसॉर्बेंट के सरफेस पे कोई भी गैस जो क्या हो सकती है, एडसॉर्ब हो सकती है. सो इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. ठीक है. ये भी कैरेक्टरिस्टिक आ गया फिजिकल एडसॉर्प्शन का. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आता है इसका रिवर्सिबल नेचर आ जाता है. रिवर्सिबल नेचर रिवर्सिबल इन नेचर मीन्स जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. ठीक है. व्हाट इज मेंट बाय रिवर्सिबल इन नेचर मीन्स if the adsorbate molecules are present on the surface of adsorbent
then they can readily leave the surface of a एडसॉर्बेंट. ठीक है, जैसे वो सरफेस एडसॉर्बेंट के सरफेस पे प्रेजेंट है वैसे वो इजिली क्या कर सकते हैं, मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो सकता है. अगर एडसॉर्प्शन हो रही है तो उसका अपोजिट जो डिसऑर्प्शन है वो भी क्या हो सकता है इसके केस में. मीन्स इफ द मॉलिक्यूल्स आर एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट दे कैन इजिली लीव द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट. वो एडसॉर्बेंट के सरफेस को लीव भी कर सकते हैं एंड दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, डिसऑर्प्शन. सो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. रिवर्सिबल नेचर मीन्स अगर एडसॉर्प्शन हो रही है तो डिसऑर्प्शन भी हो सकती है. फिजिकल एडसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल in nature. Physical adsorption is reversible in nature. See, if a gas is present on the surface of solid, adsorption हो रही है, and here we are saying that the gas molecules are present on the surface of solid. So these gas molecules can leave the surface of solid as they are held by weak intermolecular forces of attraction, weak van der Waals forces of attraction, so they will leave the surface of solid and desorption will take place. अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एडसॉर्प्शन हो रही है, एडसॉर्प्शन में भी कौन सी थी, फिजिकल एडसॉर्प्शन थी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, डिसऑर्प्शन हो जाएगी. Particles were accumulating, gas molecules were accumulating on the surface of solid. ठीक है, इस फिनोमेना को बोला हमने एडसॉर्प्शन. किस कैटेगरी में आ गया, फिजिकल एडसॉर्प्शन की कैटेगरी में आ गया. नाउ द गैस मॉलिक्यूल्स आर लीविंग द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट. सॉलिड सरफेस को अभी क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं. इस फिनोमेना को क्या बोला हमने, डिसऑर्प्शन. क्लियर है, ठीक है. सो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. एंड अगर हम प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करें फिजिकल एडसॉर्प्शन के ऊपर, तो विद इंक्रीज इन प्रेशर, what will happen? The gas molecules can be liquefied. तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करेंगी, वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी. What will happen? Rate of adsorption will increase. So rate of physical adsorption will increase with increase in pressure. अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं then what will happen? Rate of adsorption, physical adsorption will increase. Simultaneously एक और फैक्टर आ जाता है जैसे टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर कैसे जो है वो अफेक्ट करेगा और टेम्परेचर के साथ इनका कैसे कैरेक्टरिस्टिक है. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी. व्हाट विल हैपन, विद इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स दे विल लीव द सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट एंड डिसऑर्प्शन विल टेक प्लेस. ठीक है, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट. See, if the adsorbent surface is present in activated form, if the adsorbent is present in activated form, then the rate of adsorption will be what? Faster. Then the rate of adsorption will be faster. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स. Nature of adsorbent molecules. So, if the gas molecules can be liquefied easily, then
the rate of adsorption will be faster. Will be faster. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट आ जाएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ठीक है, ये दोनों भी डिस्क्राइब कर लेते हैं. सी सो फिजिकल एडसॉर्प्शन जो वो क्या है, रिवर्सिबल है. जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी एंड दे विल लीव द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट. सो फिजिकल एडसॉर्प्शन will decrease with increase in temperature. Yeah. Then effect of pressure. Physical adsorption will increase with increase in pressure. Physical adsorption will increase with increase in pressure. ठीक है. सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन. ये सारे के सारे किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल एडसॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक है. अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन. ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं बता रहा, सिंपल लाइंस में जो है वो क्लैरिफाई कर दूंगा. अगर आपको फिजिकल एडसॉर्प्शन क्लियर है तो केमिकल एडसॉर्प्शन जो है वो इजिली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है जैसे हाई एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन. ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन. ग्रेटर एनर्जी इज लिबरेटेड इन केस ऑफ व्हाट, केमिकल एडसॉर्प्शन. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इरिवर्सिबल नेचर. Irreversible nature means the chemical adsorption is irreversible in nature, that the reaction and desorption cannot take place in this case. Next, third characteristic is third जो characteristic है that is effect of temperature. Effect of temperature. अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो रेट ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन, first increases then decreases. First increases then decreases. Then अगर प्रेशर का इफेक्ट देखें तो या फिर सिलेक्टिविटी देखें तो हाईली सेलेक्टिव इन नेचर. जो आपके पास केमिकल एडसॉर्प्शन है, इट इज हाईली सेलेक्टिव इन नेचर, मीन्स अ पर्टिकुलर गैस विल बी एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ पर्टिकुलर एडसॉर्बेंट. मीन्स a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of a particular gas will be adsorbed on the surface of
सरफेस ऑफ अ particular adsorbent. ठीक है, नेक्स्ट प्रेशर का इफेक्ट क्या जाएगा? विद इंक्रीज इन प्रेशर रेट ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन विल इंक्रीज. इफेक्ट ऑफ प्रेशर, rate of chemical adsorption will increase with increase in pressure. ठीक है, ये भी आ गया. नेक्स्ट आ जाएगा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बिट. ठीक है, तो सरफेस एरिया वैसे ही चाहे वो केमिकल एड्सॉर्प्शन है या फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, उसके केस में सरफेस एरिया जो रफ होना चाहिए. नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. ठीक है, तो सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट शुड बी रफ and it should be present in activated form. Adsorbent should be present in activated form. ठीक है, जो एड्सॉर्बेंट है वो क्या होना चाहिए? वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, सो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा? इसकी वजह से इंक्रीज कर जाएगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन इज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट. ठीक है, जो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स है और जो सरफेस है उसके बीच में क्या फॉर्म होता है? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं. ठीक है, बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वेदर इट इज फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही.